Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. good afternoon, 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 Good afternoon, sir. good afternoon. Good morning, sir. Good afternoon. Okay, so let's get started. Okay, so हमने जो है ये कल फॉर्मूले रिवाइज किए थे, आप लोगों को पहले से ही आते थे, तो कोई इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं आई। ये फॉर्मूले हैं। अब लेट्स जस्ट डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। हमने एक दो कल करे थे, थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. In each prize, if each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर। और किसी सबको स्क्रीन नहीं दिख रही है? कोई और सर दिख रही है। दिख रही है। सर अर्शिता की कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए। सर नहीं दिख रही स्क्रीन। हाँ, अर्शिता औरों को दिख रही है, एक बार रीजॉइन करिए, हो सकता है दिख जाए। ओके सर। ओके, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? हम सबसे पहले, हमारे को पता है कि हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, राइट? हमें ए ढूंढना है, हमें डी ढूंढना है, राइट? सर दिख गई अब। अच्छा, ओके, ग्रेट। और हम सम को कभी कभी यूज कर सकते हैं, कभी कभी टर्म को यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजों से। और एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स। सर इसमें एसएन तो हमारा 700 दे रखा है। वेरी गुड। तो ये एंड डी दे रखा है 20। ठीक है, तो हम डी को 20 ले सकते हैं इसमें। वेरी गुड। सर डी माइनस एन शायद 7 होगा। एन 7 होगा। हाँ, 7 प्राइजेस। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, ठीक है। अभी किसी ने कहा कि डी -20 होगा, ठीक है। तो हम दोनों ही ले सकते हैं इसमें। एक्चुअली अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें, राइट, तो हमें एक्चुअली Yes, sir. लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की Yes, sir. लैंग्वेज क्या कहती है? इट इज 20 लेस देन इट्स Less than its राइट। तो इसलिए, लेकिन अगर आप 20 लेके भी सॉल्व करेंगे ना, तो बिकॉज आपको उल्टी प्रोग्रेशन मिल जाएगी, आप आंसर तो फिर भी लिख पाएंगे। वी शुड स्टिल डू इट एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एज फार एज पॉसिबल, ओके, बिकॉज उसमें फिर मार्क्स जाने का बिल्कुल रिस्क नहीं होता, ठीक है। तो -20 लेना इज अ बेटर ऑप्शन, ओके। अब हमारे पास ये चीजें हैं, अब हमें निकालना क्या रह गया? केवल फॉर्मूला ए निकाल लेंगे तो निकाल सकते हैं। Sn equals to n/2 2a plus n minus n फॉर्मूला पुट। हाँ, तो हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे? ऐसे प्लस 2a plus n minus सर 160 आंसर होगा इसका। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस होगा, तो आंसर सिंगल टर्म नहीं आएगी, ए की वैल्यू आएगी, ठीक है ना? प्रियांशु प्रशांत, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं, ठीक है। एन हमारे पास 7 है, 7/2 इंटू 2a प्लस 6 इंटू -20, ओके, which is equal to 7/2 Yes, sir. 2a minus 1। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, ताकि 2 कैंसिल हो जाए और ये रह जाएगा
a minus 60. Okay, now in this we can divide by 7 on both sides to get 100 is equal to a minus 60, and we get a is equal to 160. So this is the 160. biggest prize. This is the biggest prize. The next prize will be 140, then 140, 120, and so on. 120, till 7 180. prize. Okay, so Till you, but 7 term. in this exam, right, in the exam you have to write all the 7. Okay, so don't ever lose marks for these kind of mistakes. Okay, so हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि चलिए हो गया, ए निकल गया, अब तो हम निकाल ही लेंगे, which is fine. प्रैक्टिस में बहुत समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए, कम से कम एक बार लाउडली बोल दीजिए, मुझे एग्जाम में ये पूरा करना है, अभी नहीं कर रहा हूं. ठीक है, इस तरह आप अपने ब्रेन को ट्रेन रखिए कि एग्जाम में आंसर कंप्लीट होना जरूरी है, वरना आपका आते हुए भी कोई एक आध नंबर चला जाएगा. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. This is an interesting question from your NCERT book itself, but it's a very interesting question. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternating at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter. Then the center becomes B with the radii of 1 centimeter. Then the center becomes A again with the radii of 1.5 centimeter, and so on. Okay, so we have to find the total length of The length. यानी ऐसा. हाँ, sorry, मतलब SN निकालना है ना, SN फाइंड करना है. हाँ SN निकालना है, लेकिन वो पार्ट आसान है. इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए, राइट. तो हो क्या रहा है, हमने पहले ए पे लिया सेंटर और ये एक सेमी सर्कल बना दिया, इसका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर. फिर हमने बी पे सेंटर लिया और ये वाला सेमी सर्कल बना दिया. फिर हम वापस ए पे सेंटर लिया और ये 1.5 सेंटीमीटर के रेडियस से ये वाला सेमी सर्कल बना दिया, और ये एक्सरसाइज हमने 13 टाइम्स रिपीट की, राइट. तो अब Yes sir. ये सॉल्व करना है. तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्न जो है उसको हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं. फर्स्ट टर्न, उसकी लेंथ क्या है, तो ये है सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 0.5. ओके, द लेंथ इज पाई r of a semicircle, so which is pi into 0.5, yeah, I will write it as half. अब सेकेंड टर्न की लेंथ कितनी है, अब रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, सो अगेन pi r is equal to pi into 1, and t3 will be pi into 3/2. ओके, अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें कंसेक्यूटिव टर्म्स को, तो pi/2 डिफरेंस यहाँ आता है और pi/2 ही डिफरेंस. pi/2 will be d, common difference. So d is pi/2, and the first term, which is a is this. Okay, so this is a and this is d, right. और n हमें पता ही है, n is equal to 13. हमें सब कुछ मिल गया, अब केवल क्वेश्चन रह गया फॉर्मूले में वैल्यूज डालने का, राइट. Yes sir. तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज डाल लेंगे, जो है 2a, तो 2 into pi/2 plus n minus 1. n minus 1 is 12 into d, which is pi/2. Right? So it becomes pi plus. Sir, answer 5610 आ रहा है. No sir. एक सेकेंड. Okay, so it is 7 pi, and pi we
can use as 22/7 as it is given here, right? So सर आंसर 143 आ रहा है सेंटीमीटर. Yes, sir. 143 centimeter. सेंटीमीटर. बाहर हमने लिखा है 12/2. Okay, so 6. So it is 6 into 22. Okay, so what is 6 into 22? I have done some mistake here or what? Yes, sir. It is not 12/2. It should be 13/2. 13/2. Yes, sir. So it is 13/2. Okay, 13/2. Okay, so it is 22. We can cancel 11, so it is 13 into 11. Okay, which is 140 centimeter. Okay, in the exam, important to write the final unit as centimeter. Okay, you don't have to write centimeter in each step, but in the final, so when you are giving the values, it's okay, but in the final step, you have to write centimeter. Okay, if you miss the centimeter there, you will possibly lose a mark or a half a mark. Okay. Now let's do a similar question again. How will this question be? There are 200 logs stacked so that the bottom row is 20, then is 19, then is 18, and so on. So, हम SN चाहिए, A चाहिए, N, right? हमसे सर इसमें फर्स्ट टर्म 20 हो जाएगी और सर SN 200 है. हो जाएगी. SN 200 D हो जाएगा -1. हाँ D होगा, सर फॉर्मूला पुट कर देंगे क्योंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं. सर नंबर ऑफ. यस जिनके उसमें थोड़ा नॉइज आ रहा है. हाँ, ओके. D is -1. ढूंढना है ये 200. डिपार्टमेंट हम भी यही सोच के यहाँ खड़े हैं. आइए. So now we can do 200 is equal. सर डिस्टरबेंस हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, यस सर. हाँ देखिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए. जो बोल नहीं रहे हैं वो अनम्यूट हो जाइए. ओके, जो बोलते हैं वो अनम्यूट करके अपने को बोलिए. ठीक है, तो 200 and n/2 into 2a. We know 2a is 40 minus n-1 into d is -1, so that's why it's a minus here. So is equal to n/2 within bracket. What will it be? 41 minus n. Okay. Yes, sir. Now let's continue to do it. Okay, we can take the 2 on the other side too, and then it will become n41 minus n is equal to 400. Okay, which means we can bring the other things to this side to get n square minus 41n plus 400 is equal to 0. You got this step? Yeah, I merged a couple of steps to reach here. Okay, but this is what we are getting. We've got everything on this side and opened this bracket. That's all that we did. Okay, now we get a quadratic equation and we have to split the middle term. So how can 25 and 16. very good, very good. N squared minus 25n minus 16n plus 400 is equal to 0. Okay, and what do we get? We get n N - 25 and -16. minus 16 5. So n की वैल्यूज आ गई हमारे पास 16 and 25. Now this is tricky, right? We are getting two values of n.
right? What does that mean? Can there be two values of n? No, Yes, sir. sir. सर एक Yes, sir. पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव नेगेटिव होगी। n की वैल्यूज दोनों ही पॉजिटिव आ रही हैं, 16 और 25, नेगेटिव नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर एक बार वैल्यू 16 ले लीजिए, एक बार 25। अगर सर हम वैल्यू पुट करेंगे एक बार 16 एक बार 25, एक की वैल्यू एक में -4 आएगी -4 और एक में प्लस का 5 आएगा। तो सर हम पॉजिटिव वाली लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव में नहीं हो सकते। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन हमें ये देखना, a की वैल्यू तो हमें 20 पता है, अब हम लास्ट टर्म निकालेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ t16 and we will find the value of t25. Okay, so what will actually happen is t25 will be a negative number. Okay, आप values डाल के देखेंगे तो you will realize that it is a negative number. So the answer is 16, but we also have to find how many logs are in the top row. So we also have to, we would have already calculated the value of t16 and that would be the answer. So t16 is equal to, we will do that, t16 is equal to a plus n minus 1 d. A is equal to 20, d is -1, and n minus 1 is 50. N minus 1 is what is n minus 1? सर 16 -1 into d। 15 -1 into 15 -1। Okay, so the answer is 5. Okay. Okay, let's move on. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. Okay, so there are total of 10 potatoes. A competitor starts from the bucket. Okay, so the starting point of the competitor is here. Okay, from the bucket picks up the nearest potato, which is where, at this point, right? So she goes and picks this up, runs to the bucket and drops, and she comes back. And she continues the same way till all potatoes are in the bucket. Find the total competition run, total distance run. Okay, so in the first run, अब जाके देखिए। in the first run, how much has she run? सर 10 10. मीटर सर 10 meter. Okay, and the second run, 16 meter. 16 meters, meters. right? Why? Because it went to here 8 Because meters and came. 5 plus 3 is equals to 8. Okay, and t इसका सर डबल भी देख लेते हैं एक बार। 22 10 मीटर double 22 मीटर। प्लीज जिसके नॉइस पीछे हो बैकग्राउंड में वो म्यूट कर लीजिए। ओके, जिनके नहीं है वो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब t3 is equal to 22 meter। okay, 11 into 2. So we find that the difference is 6. Okay, 22. Yes, sir. 6. So now we have a is equal to 10. We have d is equal D equals to 6 And n is equals to and 10. number of n terms is equals to equal 10. Okay, we know everything now. Okay, 10. so we Yes, can sir. go ahead and calculate Sn, which is n By putting the formula. which is 5 into 2a, which is 20, plus n minus 1, that is 9, into 654. okay. Now
Sir, answer is 370 meter. 370 74. Meter. 5 into 5 into 74 is equals to 370. is equal to 370. Okay, answer में मीटर लिखना जरूर. Okay, so you will find that usually the AP questions, right, they can be worded in a very weedy manner. ठीक है, बहुत सारा उसमें डेटा दे देते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, but usually the calculations and everything eventually are very simple. Okay, so this is a very scoring topic. Now next, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meters long and built of solid concrete. Each step has a rise, which is the height, 1/4 of a meter, and the tread. What is the tread? If there is a step, okay, a step is like this, right? So this length is called the tread of a step. Okay, so यानी कि स्टेप की चौड़ाई, राइट, उसको ट्रेड कहते हैं, और that is half meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. Okay, now the numbers that we already know, we have to find Sn. This we can get an idea, right? Now the question is, there are 15 steps, so without thinking we know n is equal to at least 15. That we know. Okay, now we have to find A and D. So how will we do this question? See, we can think of this structure by dividing it like this, vertically, right? So if you will see, between the first two, that is the only extra part. Then in the next, this is the extra part, and so on. So this is the common difference. Okay, so first वाले का volume निकाल लेंगे. What is the volume? Height into width, the width into length into height, right? So A, Yes, sir. A is equal to 1/4 into half into 50. 50. Okay, so which is 25/4. Okay, सर ये A कैसे आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए. A is the volume of the first term is A, right? So we have to find the volume of the first step. So first step किस तरह की चीज है? ऐसी चीज है first step. ओके सर, क्यूबॉइड. ठीक है, Cuboid shape. it's a cuboid. Okay, and like this. और ये 50. ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, हमने अपना ये वैल्यू हमें मिल गई ए की. अब डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू ये वाला है एरिया, ये वाला वॉल्यूम है, जो एक्चुअली एज इतना ही है. वी कैन क्लियरली सी उसकी भी हाइट 1/4 है, उसका ट्रेड हाफ है, और लेंथ 58 इज द सेम नंबर अगेन. We don't even have to do that calculation. Okay, it could have been a different number, but in this case it is the same number, and n is 15. We have got everything we wanted. We can just go ahead and सर ये D कैसे निकला? देखो, जो अब ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे का, जिसको मैं अभी देखो, ये जो पार्ट है, ये जिसको मैंने रेड से कलर कर दिया, राइट? Yes, sir. ये इट इज सेम एज द प्रीवियस पार्ट. Yes, sir. Only this, the blue part is the new addition. Or a blue part is also a cuboid of height 1/4, width half, and length 50, right? So it could have been a different number than A, but it turns out to be the same number in this case. Okay. Yes, sir. It turns out to be that. It's not that we can blindly take it to be this thing.
be same. Okay, n is 15, so now we can go ahead and do that. 15 by 2, Sn is equal to 15 by 2 into 2a. So 2a will become 25 by 2 plus n minus 1. N minus 1 is 14 into d. d is 25 by 4. Okay, so we can cut this to get 7. Okay, so 25 by 2 common ले सकते हैं हम. Okay, 15 by 2 into 25 by 2. Bracket में what will we get? 1 plus 7. Okay, so the answer will be 15 into 25 by 4 into 8, right? So you get that here. The answer is 750. 750. Right? Now, if we leave the answer as 750, will we get our marks, full marks? No, No, sir. sir. Meter What do cube. meter cube? Very good. Thank you. Okay. So questions which involve unit, ensure you write that unit. So, you know, even in practice, ensure you are writing the units. Okay. So that it becomes a habit. Otherwise, there is a good chance that in the pressure of the exam, you might miss it. Okay. Yes, sir. Okay. Now let's do one more question. I think we have, okay, we have about 10 minutes, not enough. A man arranges to pay off a debt. Okay, debt क्या है? कर्ज of rupees 36,000 by 40 monthly installments which form an arithmetic series. When 30 of his installments are paid, he dies. Okay, so this is a very sad question. Okay, leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of the first installment. Now, forget about the numbers. Tell me, how will we do a question like this? This is a very, very good question. How will we do such a question? Anybody? कैसे करेंगे? कोई अटेम्प्ट, थॉट प्रोसेस बताइए खाली. गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता. किस तरह सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना शुरू करें? Someone? सर हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टैक्स ले लेंगे. हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को तो ले लेते हैं. ए और सर फिर सेकंड a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, हाँ. फिर सही से a प्लस 29d तक लेंगे. ओके. फिर सर शायद एक सर, जो इक्वेशन equal SN होगा वाले 2 by फॉर्मूले से 3. बना देंगे एंड एक इक्वेशन इस टाइप से a प्लस 29d. ओके. S तो 30. फिर सर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. ओके. S plus 30, राइट? ओ सॉरी, S 30, यानी कि 30 Yes, sir. इंस्टॉलमेंट्स में उसने कितना पे किया. So this is he has taken money from a very generous person, right? Who is charging him no interest here, right? If there was interest charged on it, this question will become very difficult and it wouldn't remain an arithmetic series question. Okay, so Yes, sir. there is no interest here. It's a very simple question, but still not as simple as the other questions we did. So the trick here is we actually know one thing. We know that 1/3 of the debt is remaining. So we know that how much has he paid till the 30th installment? 2/3. 2/3. Okay, so this is the trick. Yes, sir. That if you do this, so we know he has paid 24,000.
And Yes, we sir. also knew that if he pays till 40, right, if he would have not died, he would have paid 36,000, right? Yes, Now sir. we know two equations, right? S30 and S40, we know in S30 the value of n. Only thing we don't know is a and b in both the equations. So we will get two equations and two variables, so we can always solve that. Okay, so let's try and do that. Okay, so n by 2, which is 15 into 2a plus, okay, n minus 1, which is 29d. Okay, and 36,000 is equal to n by 20. 2, which is 20, 2a plus what? 39, 9D. right? Now to proceed, what Yes, we sir. will end up doing is, we will first bring 15 here, right? From here to here, Yes, sir. and 20 here, right? So this Yes, is an easy calculation. This is 1800. What will this be? This will be 1600. Okay. Okay. First you cancel by 3 and then by 5. That's the easier way. Okay. So now we have two equations. Okay. So we have 2a plus सर 20. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1600 and 2a plus 39d is equal to 1800. ये equation 1 है, ये 2 है. What we will do is 2 minus 1. Okay. So what we will get is 10d की वैल्यू is 20 आ equal जाएगी. to 200 and d is equal to 20. Then we can substitute it in the first one. Okay. So we will get 2a plus 29 into 20. Okay, what will that be? 29 into 20, 580 is equal to 1600, which means 2a is equal to 1020 and a is equal to 510, सर ए की वैल्यू 510 आ जाएगी right? Like this. So हमें d आ गया और a आ गया. Question था find the value of the first installment, तो वो हमारा ये आ गया. आंसर केवल ये है, हमें डी जरूरत नहीं है. ठीक है. और इसमें यूनिट्स क्या है? रुपी. सो जब आप आंसर लिखेंगे तो पूरा लिखिए रुपी 510. Okay, or you can also write it as 510. Nowadays we prefer this because this is a new symbol for our rupee. Okay, got that? So this was a good question. Yes, sir. Right? It is a good question. When you practice questions like this, then you prepare for the exam well. Okay, so this is, you should do some questions like this. This is from, I think, from R.S. Agrawal. So, you know, finding these questions is not difficult. Now, let's do some board questions. Okay, they are rather simple. The sum of the first 7 terms of an AP is 182. Okay. If its 4th and 17th term are in the ratio 1:5, find the AP. Okay, this is a straightforward question. How will we do it? Okay, so we are given the ratios. Okay, so we are given, sorry. सर हम वो रेशियो में करके उनके SN पुट कर देंगे हाँ, so T4 नहीं, SN नहीं है कहीं भी यहाँ. ये अच्छा, हाँ शुरू में SN है लेकिन ये टर्म सर 4th term upon 17th term equals to 1/5 Yes, sir. कर देंगे. हाँ 1/5. Yes, sir. Okay, now we write the expression for this. What is the first term? It is
Fourth Sir, term A plus 3D 3D and upon A plus 16. 16D. A plus 16D. 16D. Okay, so what do we get? We get 5A plus, sorry, 15D equals to plus 15B is equal to A plus A plus 16D. 16. A plus 16D. 16D. Okay, which means So we D get 4A is equals to equal D. to 4A. 4A. Fine. अब सर हम अब हम SN use करें इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू SN of 7 terms. Okay, तो S7 Yes, ढूंढ रहे हैं. So which is 7 by 7 by 2 into 2A, right? D पुट कर देंगे 2A 2D. plus n minus 1 is 6 into 4A. D की जगह 4A लिख दिया. ठीक है. जब आपको स्टेप शो करने हैं तो D लिख दीजिए. एक बार एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिए. अभी we will save some time, okay, because otherwise we'll run out of time. Okay, so we can solve for this. What do we get? What do we get? 7 by 2. Okay, this is 24, 26. Okay, so 13 into 7. 2A. Right? So 13 into 7. What is 13 into 7? 91. गलती लग रही है. Sorry. I have made some. We don't even have to do that. भी तो कर हाँ, हमें वो करने की पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि we can actually cancel, right? I was just wondering कि numbers बड़े हो रहे हैं बोर्ड के हिसाब से. So we yes can sir. just सर do हम it like 182 this. 7 से 182 को तो 13 कर दो. ठीक है, तो ये 182 by 7 into 13 आ गया. Right? So now what will we get? ऐड कर देंगे 40. 26, right? So A is equal to 2 आ गया. 2. yes sir, sorry. equals to And 8 हो जाएगा. D is equal to 8 आ गया. to 2. yes sir. Right? So AP हमारी क्या आ गई? हमारी AP डिफाइन हो गई है. A और D आ गए और 10, हाँ, और 18. AP is D. and Right? This is the 20. AP. Okay. So we can't do this question. Time is almost over. Okay. But this is also a good question. Okay. This is from one of your boards about 6-7 years back. But it is a good question. Okay. In the next class, we can just do these 1 or 2 questions and we will move on to the next topic. Okay. Triangles. Okay, sir. yes okay sir. Thank you Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Bye sir.